Bonjour, mes étudiantes. So today in this video, I'm going to share with you top 30 culture questions which are to be expected in your 2025 board examinations. Please note कीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये 30 questions ही करने हैं, ठीक है? आपको सारे कल्चर के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं अपने इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल दिए हैं. प्लीज वहां पर जाके डाउनलोड कर लीजिए और लर्न कर लीजिए. बट ये जो 30 कल्चर क्वेश्चंस है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो पार्ट 1 आज ये वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी, देन आई विल सून अपलोड द पार्ट 2. ऑलराइट, सो लेट्स सी वन बाय वन. The first question says, quels sont les différents niveaux du système d'éducation en France? Niveau is levels. What are the different levels of education system in France? So हमने अच्छे से पढ़ रखा है. École maternelle, école primaire, collège, lycée général. What we'll do, we'll also mention the age of the child. कि इतने साल के बच्चे जो हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी में जाएंगे, देन कॉलेज में जाएंगे. ठीक है, तो उससे हमें 2 on 2 full marks you can score. All right. Now question 2 is again it's very important. Décrivez cruise. Cruise क्या होता है and इसकी importance क्या है? तो इसकी definition learn कर लीजिए सबसे पहले. You have to write the definition and then you have to define. So it is an establishment we have done which aims or whose mission is to improve the working condition and life of the students. All right. Now let's see question 3 quickly. Question 3 is, qu'est-ce que c'est CV? CV is your resume. What is CV and what are the different parts of a CV? So it is curriculum vitae and CV क्या represent करता है, उसके main parts पूछ लिए जाएंगे आपसे question में. So historic professional experience आपका, और इस पे एतात civil, ले titles, professional experience and languages a person can speak or he or she knows the languages, वो we can mention. All right. Now question 4 says, quel est le travail d'un secrétaire? ये काफी पूछा जाता है. 2018 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था. सो एक सेक्रेटरी चैप्टर 3 में से ये क्वेश्चन है, उसका क्या वर्क होता है? लिटिल इंटेलेक्चुअल और लिटिल मैनुअल वर्क शी कैन डू. Elle doit prendre des notes, taper en premier, des lettres, ranger les dossiers, prendre les photocopies. Okay, now next important question is, which is expected, enumerate quelques objets qu'on peut trouver dans un bureau. All right, again few objects which we can find in an office. So these are the few objects: stylo, trombone, stylo à billes, ruban adhesive, gums, etc. You can write any 4 or 5, you will get full 2 on 2. Okay, now next question says, que dois-tu faire quand tu es chômage? Very important question. On doit s'inscrire sur le site web pôle emploi.fr et aussi dans ANP. अगर if we are unemployed, then we'll registered on the site pôle emploi.fr and ANP, which helps us to find a job. And be optimist, be positive, and also we can do interim is a temporary job or part-time job. Okay. Now next question इसी से पूछ सकते हैं. They can ask you, what do you mean by the term interim? So interim means a part-time job. Okay, sometimes a salary is absent, they'll not give you salary, they'll give you a very less amount of money to provide that service. All right, that's it. So this is interim, you have to learn which are. Next question is very important question. De quoi a-t-on besoin pour avoir une carte de lecture? All right, what are the things how we can obtain the library card? So what 3 things we need? Identity card, the piece d'identité, authorization of your parents, and electricity bill. Okay, now next question is, why we go to library? We go to library to borrow the books, novels, BD, etc. And we can also bring that borrow that books at our place, or we can read at that place also. All right. Next important question is, qui était Charles Perrault? Who is Charles Perrault? और उसके कुछ कॉन्स के नाम बताइए जो उन्होंने लिखे हैं. So Charles Perrault, he was a French writer. He was a French writer of 10e siècle. All right, 10th century के ये writer हैं. Petit Chapeau Rouge और Cinderella जो है, इनकी जो famous कॉन्ट है, you can mention that.
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बॉन दिजीने, व्हाट इज दिस? आपको पता है बॉन दिजीने इज अ कॉमिक बुक, ओके, पिक्चर्स के साथ जो दिया जाता है। आपका चैप्टर 4 जो है बिब्लियोथेक वाला, वो पूरा एक बॉन दिजीने की फॉर्मेशन में उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। सो बॉन दिजीने zetiam successio des images organisées pour raconter une histoire avec le texte sur l'image, all right, under the image. Qu'est-ce qu'une fable et un conte? Et un conte, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। फाब्ल क्या होता है और कॉन्ट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे। मैंने जब कल्चर की वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में मैंने बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। फाब्ल होता है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो होते हैं, वो आपको करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेपा पिग, अगर बच्चे देखते हैं उसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो रोल प्ले करते हैं वो एनिमल्स हैं, ओके, तो उसे हम एक फाब्ल बोलेंगे। और कॉन्ट क्या होता है? एडवेंचर, इमेजिनेशन, कुछ भी स्टोरी है, मैजिकल स्टोरीज हैं, तो वो सारे आपका कॉन्ट, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फाब्ल है, ये कॉन्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यू हैव टू लर्न। Now next question is nommez quelques rubriques dans le journal. न्यूज़पेपर के rubric is column, तो न्यूज़पेपर के कॉलम्स आप लिख दीजिए। वेदर इज देयर, इकोनॉमी, फेथ दिवर, मिसलेनियस, ला स्पोर्ट, culture, ला पॉलिटिक, एटसेट्रा, ओके। फैबली यहाँ पे दोबारा रिपीट है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो rest, I'll share you the questions in the next video. Till then, merci, follow for more.